We now move on to our third technical session for today's summit, the topic of which is policy and regulation in Indian healthcare and building robust healthcare infrastructure. The session chairs for the session are Mr. Matradatta Mishra Sir, Convener, Real Estate Committee, ICC Odisha State Council, and Director, SJ Developers. Mr. Milind Deshpande Sir, Executive Vice President, Medica Bazaar. And the speaker for this technical session is Dr. Girdhar J. Gyani Sir, Director General, AHPI. Very good afternoon. First of all, I'd like to thank Nilanjana ji to inviting me to chair this technical session. Like Somendra sir said, my wife being a doctor, she asked me what you are going to do in a health summit. So I said ki I can only understand buildings and developing buildings. That is what I am going to address there, and experts are there to understand more about that. I'm here to address an industry which really touches the nation well-being, and we all know the progress of any state and country cannot be possible being citizens' well-being. So every industry, like my industry, everyone need our citizens to be well, our workers to be well, we are to be well, then only we can build a good nation. And what I heard from Gyani ji, like we have only 1.8 beds available in 1,000 population. So as a entrepreneur, I see a huge potential in this business. So health, it doesn't look good saying health is a business, but it's a business. I would like to thank government of Odisha, really came forward and building so many colleges, medical colleges, and like we knew there is only 3 medical colleges, now it is 15 medical colleges, and producing so many MBBS and postgraduate doctors, and it's really going to help this industry. And again, government of India, government of Odisha is really working hard and already built a wonderful road network, rail network, and even air connectivity, which is really going to boost this industry. As we know, communication is very, very essential in this industry because people have to travel as early as possible to the nearest health institute. I, being a developer, I see a enormous potential in this industry where so many hospitals can be. We need more and more hospitals to come up because infrastructure is really government of Odisha and India is trying to build, and hospitals, more and more hospitals can be. How we can bring in that I thought I'm sharing with my uh, experts present here and here also. Like IT infrastructure, a presence of private developers. It's very, very essential to build such large infrastructure like IT infrastructure been built in past and presently because of the collaboration of private developers and the service providers. Even in hospitals, in hotels these days, you see most of the bigger brands, which they were earlier owning hotels, now they come into operation. So every hotel these days you will see 8 out of 10 hotels are in operation. Like there is a wonderful revenue model where private developers come forward, build a hotel, and operator come forward, run it with investors, individual involved in this with a proper revenue model. If it can be workable in this IT and hotels, why not in hospitals? It's a huge potential. So I feel if we can really discuss on certain good revenue model like other IT and hotels are doing, we can really, if private developer come into this field,
and medical service providers are there. They can work together and collaborate. And I feel thousands of hospitals can be built in a smaller time. And even ICC, I will request ICC office if they can really make a report and in consultation with ICC Health Summit, Health Committee and Real Estate Committee, they can bring in a report how the model can be worked out. If from this summit we can really build one hospital in this model, that will fulfill the agenda of this summit. And sure, yes, other infrastructure like the equipment and the best thing is the producing the doctors. Yeah, I would never say like Somendra sir said, doctors are not God, but they are representative, definitely. So if more and more doctors can be produced and this sector and this is going to build the nation well. Thank you, and I will not take much time. I will request Gyani ji to give his expert comments. Because I see, we are running really very late now. And I will also say the ICC and our HCI chapter have underestimated the potential of this place. Next time we should hold one full day conference, not half a day. Because the kind of interest which is being shown and the kind of experts you have invited, it deserves one full day. Anyway, I think that today's topic, is very comprehensive. I don't know, Nilanjana or Dr. Deepak has designed this session for me, that it covers virtually everything under the roof. So, still, let me see how I try to cover. This, of course, is a simple point, which you can see that I have tried to put forward, which are the challenges for the healthcare industry. And I think the top of my concern is the negative perception. I think we have discussed this in the very first session. And this negative perception has been growing because of various reasons. And one of the reasons which I think one of you pointed out from here, there's the cost. Poor communication, lack of empathy and all those things. But cost is definitely one of the reason. Because when the patient goes to government hospital, it gets the treatment free. For same thing, when he goes to private hospital, naturally he has to pay. So I think, and if the outcomes are not positive, obviously, he starts talking negatively. So one of the suggestions, actually, I forgot, I should have given to the administrator who came from government, is that next time the Odisha government, whenever the patient goes to a government hospital, suppose, I tell you the average cost of maintaining a bed in a government hospital comes to around 8 to 9,000 rupees. I am talking of general ward. So next time a patient is admitted in a government hospital for 3 days, they should bill 3 into 8, 24,000. Okay? Subsidy 24,000. Bill comes zero. Now the patient knows that government is spending 24,000 on me for 3 days. So when they go next time to a private hospital, I think they will look at you differently. This is a simple measure which actually government should do it. Actually, we can write them officially also. In fact, I have done it in few states already, advised rather few states, and they are doing it, particularly Punjab and Delhi government. Anyway, but other things I think we have already discussed. These are the points which I will try to touch upon. And this is because the health policy, after 15 years of a gap, we came out with a new health policy in 2017. And if you have heard when Mr. Narendra Modi took over as the Prime Minister, not actually before that itself, in his manifesto, he used to talk about that he will initiate the health assurance system in the country. And keeping that in view in 2017, they brought out the new health policy. These are some of the components which, again, I think we will not be discussing in detail. But, the primary healthcare strengthening, immediately after the launch of the policy in 2017, in 2018, the government brought this Ayushman scheme. In fact, I have been part of all these committees. So let me tell you, whenever we used to sit in the Ministry of Health,
we used to really say that this is absolutely premature because we launched the Ayushman Bharat with very limited preparation. But that is the style sometimes. Some of the leaders will do that way. Launch it, देखा जाएगा कैसे होता है. That at sometimes it works also. And actually, even today in Niti Aayog we were discussing other day that out of we wanted 500 crores. 500 million. That means 50 crores population to be covered in the first phase of the Ayushman Bharat. अभी तक हमने 25 करोड़ के आसपास कार्ड इशू किए हैं. Because it is very difficult to even identify who are the beneficiaries. तो लॉन्च करना एक बात है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है. बट एनी वे आई थिंक वी आर ऑन दैट रोड हियर दैट इज देन प्राइमरी जो सब सेंटर थे 1.1.5 लाख हमारे कंट्री में है, उनको कह दिया गया कि इनको सबको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाओ. उसमें स्क्रीनिंग भी होगी एंड कंपोनेंट ऑफ वेलनेस होगा उसमें एंड टेलीमेडिसिन से कनेक्टेड होंगे. एंड यू मस्ट हैव सीन दैट आज तक हम करीब 65,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इक्विप हो चुके हैं. एंड व्हाट वी हैव डन इज टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स. द नर्सेज वर रिक्रूटेड, ट्रेन्ड फॉर 6 months, and they have been positioned as the in charge of these health and wellness center. So I think a lot of things actually are happening already, in the kind of policy which was done. Healthcare infrastructure के ऊपर आज का topic है and human resources. I will touch upon that. These are some of the additional component in the healthcare policy. NCDs, mental health. Yes, this is the one area which actually is bothering the government. Because we have focused too much on cardiovascular, diseases, but mental health is now emerging. For example, a simple thing like stroke. We have done bit of, market survey. Public is unaware about it. What are the symptoms for the stroke? When should they rush to the hospital? On top of it, many physicians in the emergency department, they were not knowing that now the golden period is 4.5 hours, 4.5 घंटे. अभी भी वो 3 घंटे की बात करते हैं. So and the protocol of course, कहाँ immediately CT में जाना है, पब्लिक को immediately CT के suppose they go to a nursing home जहाँ पे CT नहीं है, nothing, we'll be losing. You see the mental health, I spoke in the government very strongly on this point because cardiovascular में क्या है, आदमी चलो कभी कभी गलती से मर जाएगा. In mental, in a stroke case, if you go for the conservative treatment, you are lifelong liability for the whole family. So I think this mental health, stroke is going to be one of the priority area, and HPI is going to circulate the protocol and launch the public awareness from the next month itself. So that is one area we are working very strongly. Baki, I will touch upon the other points in my subsequent slides. This is, of course, the, you all are aware about that healthcare is regulated. Healthcare has to be regulated, in that there is no doubt about it. Why it has to be regulated? Because this is the one area which is affect the well-being of the population. तो जो एरिया इस तरह के होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है. फूड सेफ्टी है, हमारी IRD है, टेलीकम्युनिकेशन है, इसमें हमारे रेगुलेटर बैठे हुए हैं. नाउ यू ऑल आर अवेयर दैट हु इज रेगुलेटिंग यू. आपका स्टेट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है हेल्थ केयर, वही रेगुलेशन भी करता है. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग गवर्नमेंट शुड नॉट रेगुलेट. वर्ल्ड ओवर प्रैक्टिस है, रेगुलेटर हैज टू बी आउट ऑफ द गवर्नमेंट. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, वेस्ट बंगाल में काफ़ी प्रॉब्लम है हेल्थ केयर में वैसे तो, लेकिन एक बात उन्होंने जो की है, जो नो अदर स्टेट हैज डन इट, दे हैव अपॉइंटेड ए रिटायर्ड जज एज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट रेगुलेटरी बॉडी. और उसके साथ मेरा अभी दुर्गापुर में अभी इंटरेक्शन होने वाला है ऑन 1 September. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हालांकि वो रेगुलेटरी बॉडी उस तरह से नहीं बनी है, बट एनीवे कुछ तो बनाया है उन्होंने. वी आर प्रपोजिंग टू द गवर्नमेंट नाउ दैट वी शुड हैव ए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर लाइक IRDA, like TRI, like FSSAI, because independent regulator क्या होता है, वो गवर्नमेंट की भी नहीं सुनेगा, because he is empowered through the statute. वो देखेगा अभी आपकी प्रॉब्लम आती है, आपको मान लीजिए कि कॉस्टिंग की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट हैज नॉट डन कॉस्टिंग टिल नाउ, और वो दे वांट टू रिम्बर्स द प्रोसीजर एट आई डोंट नो व्हाट एवर कॉस्ट.
एक रेगुलेटर होगा, ही विल रेगुलेट द कॉस्टिंग बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रोसीजर। आपको बायोमेडिकल वेस्ट, तमाम चीज़ें जो हैं वो रेगुलेटर देखेगा। होपफुली, आई डोंट नो व्हेन इट विल हैपन, बिकॉज समटाइम्स एज ए इंडस्ट्री यू विल से नहीं नहीं साहब, रेगुलेटर आप क्यों बिठा रहे हो, क्यों मुसीबत ला रहे हो। बट आई एम टेलिंग यू, ए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर विल बी अवर फ्रेंड। He will actually safeguard us from the consumer, from the government, and all other stakeholders. Anyway, so we are working on that. तो इस समय हमारे पास आपको पता ही है कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना था 2010 में, इम्प्लीमेंट हुआ था 2011 में। मुश्किल से 8-9 स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया, वो भी हार्डली एनी। तो वी आर एक्चुअली रनिंग विदाउट एनी रेगुलेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, जब उनका मूड होता है, किसी आदमी का आपके वो हॉस्पिटल में आ जाएगा, एक दो चीज़ बताएगा गड़बड़ और आपको पेनल्टी इनिशिएट कर देगा। सो आई थिंक वी आर रनिंग वेरी हेफेजेड मैनर दिस क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये इसके जो मिनिमम क्राइटेरिया है, व्हेन आई वाज सेक्रेटरी जनरल क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, हमने इनको बना के दिए थे सब कुछ, लेकिन वो कहीं कुछ भी इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। सो एनीवे, दिस इज अबाउट द क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। Let me come to the actual topic of the day, because this is which we are looking, and this is the way we are working with the government. How do we build the infrastructure? तो ये आपके सामने जो स्टैटिस्टिक्स है, पब्लिक सेक्टर बेड आपको मॉर्निंग में भी बताए थे करीब 7 लाख हैं, और ये 11,85,000 ये बेड हमारे प्राइवेट सेक्टर में हैं। और अगर आप इसकी नेशनल एवरेज निकालेंगे तो 1.56 आएगी। हालांकि इसमें जैसे मैंने कहा 20% बेड अभी बढ़ गए हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी आर टचिंग द रेशियो क्लोज टू 1.8, जो कि 3.5 जो रेशियो है प्रिस्क्राइब्ड बाय WHO फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्री के लिए 5 है, बट डेवलपिंग कंट्री के लिए 3.5 है। दैट मीन यू स्टिल नीड डबल द नंबर ऑफ बेड्स इन अवर कंट्री। ये आपके सामने जो स्टेटिस्टिक्स है, 100 बेड के ऊपर करीब 5,000 है हमारे पास। और जो सबसे बड़ा इशू है वो बिलो 30 बेड वाला है, 40,000। उनको हमने, अगर हम वी कैन अपग्रेड एंड मेक देम मोर प्रोफेशनल with the help of technology. But what we have done survey many times, when you talk to the clinician who are running this small nursing home in the remote or in the tier 3 or tier 2 town, they say साहब हम comfortable हैं, हमें कुछ ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, नहीं तो वो फिर वो लीगल और ये लेबर लॉ ये वो आ जाएगा, हम इसमें काफ़ी खुश हैं। विच वी कीप टेलिंग देम, भाई हमें ज़रूरत है आपको नंबर ऑफ बेड बढ़ाने की, मेक इट प्रोफेशनल। सो एनीवे, दैट इज़ द वन एरिया वेयर वी हैव टू वर्क। ऑफ कोर्स रेशो ऑफ अर्बन वर्सेस रूरल इज 70-30, ये काफ़ी दिनों से वही रेशो चल रहा है। एंड ये जो है, वी हैव सबमिटेड दिस रिकमेंडेशन। I told you in the morning of my talk that Prime Minister wanted 3,000 hospitals of 100 bed size in tier 3 towns. और मेरे हिसाब से एक भी अस्पताल नहीं खुला है। I am telling you very confidently. और उसका एक ही तरीका है, क्योंकि ओवरआर्चिंग तो रीज़न ये है कि अगर आपको मैं कहूँ कि आप हॉस्पिटल खोलिए, तो वी विल से अरे साहब मेरे पास डॉक्टर कौन जाएगा, who will go to tier 3 town when they are getting consumed in tier 1 and tier 2 town. तो वो एक इशू है, लेकिन वो ग्रेजुअली धीरे धीरे एज वी गेट मोर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट, ऑटोमेटिकली वी विल स्टार्ट गेटिंग देम टू सर्व देम इन tier 3 town. So that is a transition phase. But over and above these 4 points we have submitted to the government, detailed paper will go in near future, which are in front of you, that we wanted the soft loan plus the tax holidays, acquiring the एक और मॉडल अभी गवर्नमेंट में डिस्कशन हो रहा है कि they are saying now what we'll do, we'll take a land, even build the hospital for you, and then hand over to you what Commander Bali was telling you. Then they will hand over to you to run it. So and that will be known as Ayushman Bharat Hospital. ये अभी प्लानिंग में है, हो सकता है कुछ दिनों में अनाउंसमेंट इसका हो जाए. But till that time, if nowadays I think finance is not a problem, equity is available in plenty. If some of you can थोड़ा हिम्मत करके आप बना सकते हैं एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए 3 से 5 साल वेट कर सकते हैं, दैन दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज tier 3 टाउन में हमारे पास टर्शियरी केयर हॉस्पिटल नहीं है. एंड एनीवे, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव सबमिटेड टू द गवर्नमेंट.
एंड दिस ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं बहुत स्टेट का एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे तेलंगाना का एग्जांपल मैं कई बार देता हूँ। वहाँ पे हमने जब, हमारे पास डायरेक्टरी है इसकी, और उसमें मेडिका बाजार ने पार्टनर थे हमारे, जब हमने डायरेक्टरी बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना में 100 बेड एंड अबव 125 अस्पताल हैं, 125 हॉस्पिटल्स आर देयर इन तेलंगाना, out of which you'll be shocked to know 118 are only in Hyderabad. So this is the problem of the country. That means rest of Telangana में सिर्फ 7 अस्पताल हैं which are 100 bed and above. When I am saying 100 bed and above, because they are primarily the tertiary care hospital. तो ये इवन हमने तमिलनाडु में देखा, 50% of 100 bed hospitals are in चेन्नई एंड कोयम्बटूर। ऐसे ही हर जगह यही है। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, आई एम श्योर उड़ीसा में। ये जो चीज़ हमने निकाली है, ये भी जैसे मैंने बताया आपको, इसमें 20% आप ऐड कर सकते हो। लेकिन आप देखिए उड़ीसा अभी आपका काफ़ी पीछे है इस लिहाज से, बिकॉज दिस इज ए, यू नो, भुवनेश्वर में भी हैविंग मे बी 2.5 बेड्स पर 1000 हो सकता है, कटक में हो सकता है, लेकिन व्हेन यू टेक होल उड़ीसा इट इज रेशियो इज कमिंग ओनली 0.61। एंड यू नो विच इज द लीड स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा है डेंसिटी? एनी गेस? केरला? नो, इट इज कर्नाटका। कर्नाटका हैज गॉट 4.1 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, while Kerala has got 3.0 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन। तो ये आपका बेंचमार्क है किसी भी स्टेट के लिए। हमारे पास पूरे कंट्री का डेटा है, और उसमें भी वो अपग्रेड करके हम लोग, अभी जब नया डेटा आ गया हमारे पास, वी विल बी शोइंग यू। बट द रेशियो, क्योंकि पॉपुलेशन भी आपकी 4 करोड़ से थोड़ी सी और बढ़ गई है, 4.5 करोड़ हो गई है अभी। एनीवे, सो दिस इज वेयर पुअर एक्सेसिबिलिटी इज आल्सो इशू लाइक अवेलेबिलिटी। हाँ, देखिए ये जो है, बाकी ये जो डॉक्टर्स का जो है स्टैटिस्टिक्स आप सबको पता ही है ऑलरेडी। एलोपैथिक डॉक्टर्स हमारा करीब करीब 1:1000 के रेशो पे हम लोग आ गए हैं। WHO कहता है कि 1000 के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए, और हम लोग इस पे आ गए हैं, क्योंकि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। तो अगर आप 13 लाख कहोगे तो 1:1000 हो गया है। लेकिन इसमें हम लोग ये नहीं देखते हैं कि इसमें अगर आप स्पेशलिस्ट के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये देवी शेट्टी के अस्पताल के हमारे कमांडर साहब बैठे हैं यहाँ पर, कि डॉक्टर देवी शेट्टी ने एक बार कहा था, एक हमारे साथ, मैं भी वहीं था उस दिन, इट वाज इन द प्लानिंग कमीशन, कि MBBS इज लाइक ए हाउस वाइफ, नो बेटर देन हाउस वाइफ। ये स्टेटमेंट डॉक्टर देवी शेट्टी ने दिया था। वो क्यों दिया था? मतलब यू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने MBBS को इस तरह से यूज़ करना बंद कर दिया है। एक्चुअली 25 साल पहले MBBS सर्जरी भी करता था, MBBS एनेस्थीसिया भी देता था, सब कुछ कर सकता था। आज हम कहते हैं MBBS है भैया, तुम खाली जूनियर रेजिडेंट बन के बैठो। तो दिस इज वेरी सैड पार्ट आई विल से, विच वी हैव मेड टुडे, बट आई विल नॉट गोइंग टू डिटेल वो क्यों हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ये हम 13 लाख में अगर मैं स्पेशलिस्ट काउंट करने की कोशिश करूँगा तो मुश्किल से 6.5 लाख आएंगे। तो प्रॉब्लम इज वी आर बैक टू दैट सेम प्रॉब्लम कि हमारे पास जो है 0.5 डॉक्टर्स हैं पर 1000 पॉपुलेशन। हमें इसको, वी आर वर्किंग ऑन इट, वी मीन्स एवरीबडी इज वर्किंग ऑन इट। दूसरा है, अगर आयुष डॉक्टर को हम यूटिलाइज करना शुरू कर दें, जो हम सैडली नहीं कर पाए हैं। वी आर ओनली ट्राइंग कि आयुष को 6 महीने की ट्रेनिंग देके एलोपैथिक बना दो। अरे भाई, व्हाई नॉट वी प्रमोट देम टू प्रैक्टिस आयुष? एनीवे, उसके ऊपर भी समथिंग इज वर्किंग। अलाइड हेल्थ केयर का डेटा अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं है ये, क्योंकि यू नो व्हेन वी कलेक्टेड दिस डेटा, वी मीन थ्रू एन एजेंसी, दे टोल्ड अस मोस्ट ऑफ द अलाइड हेल्थ केयर आर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, वो काउंटिंग में नहीं आते हैं। रेगुलर बेसिस पे इट इज ओनली 13 lakhs, while actually it should be 6 times that of the doctor overall, अगर आप देखें तो वो एक इशू है। अलाइड हेल्थ केयर की कमीशन अभी बन गई है, एंड वेरी सून आई थिंक वी विल स्टार्ट गेटिंग दी क्रेडेंशियल एलोपैथिक, सॉरी, दी अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। बाकी ये देखिए MBBS सीटें तो बहुत बढ़ गई हैं, 1 लाख से ऊपर चली गई हैं अभी, ये सब कुछ हो रहा है। तो दिस इज़ बट
क्वेश्चन इज इट विल टेक टाइम. MBBS सीट अभी इस साल बढ़ी है, लास्ट ईयर ही बढ़ी है. इट विल टेक 5 years फॉर देम टू कम आउट, another 3 years टू बिकम स्पेशलिस्ट. तो आई थिंक हमें 8 साल अभी और वेट करना पड़ेगा टू कम अप टू सम नियर. बाकी ये आउट ऑफ पॉकेट, what Commander Bali was telling, this is where, this is of course data I have taken from the ministry, that they are saying that in 2019 this has come down to 48%. Now, you see, one thing I can say, अगर हमारी आयुष्मान भारत स्कीम मेच्योर हो जाए, ओके, दैट मीन्स 40% पॉपुलेशन तो उसी में कवर हो जाएगी. Then we have got CGHS, ECHS, ESI. Then we have got some public sector undertaking, they run the scheme. Then we have got private insurance scheme. If they come with the full maturity, my expectation is next 3 years, this we have done on the basis of certain permutation and combination. We are expecting that out of pocket paying population may go down to 20%. But ये all presumption है. If everything falls in place, so that will be the time when you can say India has achieved universal health coverage. क्योंकि universal health coverage का मतलब है that we are providing healthcare at the cost what people can afford. तो ये सब चल रहा है, लेकिन you see we do not know, sometimes what can happen, So बाकी ये जो है ये आपको मैंने सब दिखा दिया है, So that's what we are aiming. अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम दिखाएंगे इसमें, दैट ऑफ कोर्स दिस अबाउट द क्वालिटी एंड एक्रेडिटेशन, दैट इज़ माय ओल्ड फील्ड. आजकल मैं क्वालिटी पे कम बोलता हूँ क्योंकि अब बहुत लोग आ गए हैं, अब मुझे इसलिए एडवोकेसी में आना पड़ा है. लेकिन ये आपके सामने नंबर है, अच्छा है, आई विल से 18 साल में हमने इतना टच कर लिया है. सर्टिफाइड जो एंट्री लेवल के 10,000 हो गए हैं, 2,000 हमारे फुल्ली एक्रेडिटेड हैं, और सब कुछ है, फिलहाल अच्छा चल रहा है. ओनली प्रॉब्लम क्या आ रही है, आई थिंक सूनर और लेटर क्वालिटी हैज़ टू बी ड्रिवन बाय द कंज्यूमर. अभी क्या हो रहा है, आप NABH के पास जाते हो क्योंकि आपको 15% एक्स्ट्रा CGHS देता है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी ने कंडीशन लगा रखी है. व्हाट आई एम सेइंग, when it will be driven by the consumer, that they will ask you this question, do you have any quality benchmark or quality certification? That means we are empowering consumer to demand quality. उसके लिए NABH has to work, consumer affair ministry has to work, सब कुछ को काम करना पड़ेगा. But end of the day you have to understand कि ये NABH या quality क्यों है. Basically it is to reduce the medical errors. सिर्फ वन फंडामेंटल है, टू इम्प्रूव द पेशेंट सेफ्टी. वन पॉइंट आई विल लाइक टू टेल यू, जो कि बहुत ही पर्सनली मेरे को कंसर्न है इस समय. क्लिनिकल क्वालिटी हैज इम्प्रूव्ड, आई कैन डेफिनेटली से आवर इंडिकेटर्स हैव इम्प्रूव्ड. सरप्राइजिंगली, डॉक्टर दीपक, आई एम टेलिंग यू हियर, सर्विस क्वालिटी इज गोइंग डाउन. दिस इज व्हाट I am getting the feedback from all the organization. Empathy factor, हम मैकेनिकल ट्रीट करते हैं लोगों को. इमरजेंसी में हालत बुरी है. इमरजेंसी डिपार्टमेंट शुड बी द बेस्ट. एक्चुअली व्हेन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया इन 2005, गवर्नमेंट ने मुझे कहा कि आप पहले NABH बनाना है, ऑस्ट्रेलिया घूम के आओ. वी वर सेंट टू ऑस्ट्रेलिया. वहाँ पे मैंने देखा, आई वॉज टोल्ड आपको हॉस्पिटल असेस करना है, इमरजेंसी में जाओ, क्रिटिकल केयर में जाओ रात में, बाकी कुछ देखो ही मत. If these two departments are functioning, you can give them the accreditation. There is no need of spending 4 days and 3 assessor घूम रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है. आप इन 2 डिपार्टमेंट को देख लो. So I am saying that our emergency departments, of course मुझे कहना नहीं चाहिए because ये कमांडर बाली यहाँ बैठे हैं, तो इनका हॉस्पिटल का इमरजेंसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, आई टेल देम, इन द गुड़गांव. तो इतना स्पेशियस है और इतने स्टाफ हैं वहाँ पे. अदरवाइज क्या होता है, एक स्ट्रोक का पेशेंट आ रहा है, एक जूनियर रेजिडेंट बेचारा कोई बैठा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं CT करूँ, MRI करूँ, क्या करूँ, एंड बाय द टाइम डैमेज इज डन.
तो एनीवे दिस इज फ्रॉम माय साइड, प्लीज फोकस ऑन सर्विस क्वालिटी, बिकॉज पेशेंट जो है ना क्लिनिकल क्वालिटी के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है. ही विल असेस यू ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस क्वालिटी. तो समटाइम्स यू निग्लेक्ट दैट. आपके रजिस्ट्रेशन पे, फी काउंटर पे वो ऐसे लड़के लड़कियां होने चाहिए who are really full of empathy, so you put best people in that place. Anyway, ये फिर लंबा टॉपिक हो जाएगा. ओके, ये जो है हेल्थ केयर फिनांसिंग, ये आपके सामने है. गवर्नमेंट की तरफ से 2% से कम है. 2025 में वो 2.5% करेंगे. प्राइवेट सेक्टर इज इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट 3%. तो मिला के हम लोग 5% पे हैं इस समय. ग्लोबल एवरेज है 9.5%. तो हमें अभी काफ़ी लंबा एक रास्ता तय करना है हमको. और अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं सबको कई बार, अब तो खैर मेरी एज हो गई है कि मैं गवर्नमेंट को भी समझा सकता हूँ. आई कीप टेलिंग देम, तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कैपेक्स में डाल नहीं सकते हो, नए पब्लिक हॉस्पिटल खोल नहीं सकते हो. एम्स 2-4 खोल दिए उन्होंने, कोई बात नहीं है. आई टेल देम यू शुड बी इंटेलिजेंट. You encourage private sector to invest, capex आपका बच जाएगा, and then buy the healthcare from them, which they are doing it. CGHS, आप उनसे buy करो, but for God's sake, give them the reimbursement which is at the operating, कम से कम operating cost तो उनकी निकले. आप देखिए, this is one factor. आप देखिए बड़े बड़े लोग जो है, चाहे अदानी कह लो, अंबानी कह लो, टाटा कह लो, लार्सन एंड ट्यूब्रो कह लो, they are not investing in the healthcare. So if government can encourage little bit on them, they are ready to invest huge money. But only problem is, और उसका एक solution भी आपको मैं बता रहा हूँ, आपको भी नहीं, गवर्नमेंट को भी बताना है. सपोज गवर्नमेंट कहती है कि मुझे रिम्बर्समेंट के लिए भी पैसा नहीं है, ठीक है, तभी वो कम रेट पे दे. उसका सिंपल तरीका जो यूरोप में होता है, को पेमेंट. आप देखिए, CGHS का रेट लगा दिया आपने 100 रुपीज़. आपका हॉस्पिटल कहता है जी मेरा तो रेट 130 रुपीज़ है. ठीक है, गवर्नमेंट को अलाउ कर देना चाहिए. पेशेंट हैज़ गॉट चॉइस, कम टू यू, 100 रुपीज़ यू गेट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 30 रुपीज़ आई पे फ्रॉम माई पॉकेट एज ए पेशेंट. बेस्ट वे ऑफ इट. लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को हिम्मत करनी पड़ती है, बिकॉज दे थिंक पब्लिक अगेंस्ट हो जाएगी कि कोई नहीं है. पीपल आर रेडी टू पे बिट ऑफ मनी. लेट मी टेल यू, पीपल डोंट वांट फ्री हेल्थ केयर. ये छोटे से मेजर्स अगर गवर्नमेंट कर दे, कैपेक्स थ्रू द प्राइवेट सेक्टर एंड इंट्रोड्यूस को पेमेंट, यू आर गोइंग टू सॉल्व बल्क ऑफ द प्रॉब्लम्स. ओके, ये अभी ये बाय द वे बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बनाया है. आई थिंक इट इज गोइंग इन ए बिग वे. HPI इज पार्टनरिंग विद द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड देयर इज ए इंसेंटिव स्कीम. यू मस्ट बी नोइंग that if the government, the doctor is encouraging patients to get the health card, you get the reimbursement for that. I don't know whether you are aware of that or not. Otherwise, Deepak Mitra and Nilanjana, you have to bring them to the notice of everybody, and we can organize a small webinar for that, So this is a excellent scheme. अगर हम 3 साल में इसको पूरा कर लें, India will be, जो हम कह रहे थे विश्व गुरु बनने वाली बात, वो हो सकती है. ये NCDs का प्रॉब्लम है. एनीवे, आई थिंक वी आर डीलिंग विथ इट. यू हैव नो ऑप्शन. ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के वो भी बजट काफ़ी आ गया है. 30,000 करोड़ हैड बीन ईयरमार्क्ड बाय द गवर्नमेंट. एंड यहाँ पे 2 रिसर्च पेपर मैंने पढ़े थे पहले, अभी भी है वो, कि अगर आप 1 रुपया खर्च करें प्रिवेंशन पे, यू कैन सेव 5 रुपीज़ ऑन क्यूरेटिव केयर. और एक दूसरा पेपर तो दूसरा एक्सट्रीम है, 1 रुपया स्पेंड करिए, यू विल सेंड 10 रुपीज़. आई डोंट नो विच वन इज करेक्ट, बट डेफिनेटली यू हैव ह्यूज सेविंग. ये जो है एक जो कमांडर बाली ने आपको बात बताई, मैं उसको थोड़ा एलॉबरेट कर देता हूँ. HPI इज पार्टनरिंग विद द NSDC और मुझे उन्होंने नॉमिनेट किया है एज ए एडवाइजर टू NSDC फॉर foreign deployment of the healthcare professional. Okay. Now what he was telling, 1 लाख डिमांड है. आप लोग को लग रहा था कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं. नहीं, डिमांड बहुत ज़्यादा है. एक फॉर एग्जाम्पल जैपनीज गवर्नमेंट का हमारे पास आया हुआ है नोट, बट दैट इज ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट. उनको 50 केयर गिवर चाहिए. 50 केयर गिवर मीन जो
वो GNM किया हुआ हो, उनको वो 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे इंडिया में ऑन कल्चर ऑफ जापान एंड ह्यूज सैलरी एंड परमानेंट रेजिडेंसी इन जापान। ये स्कीम हमने लॉन्च की है, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट ही वाज टेलिंग यू, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज, दे वांट फ्रेश नर्सेज, जिसके लिए हम लोग नर्सिंग कॉलेज को इम्पेनल कर रहे हैं। तो इफ एनी वन ऑफ यू इज रनिंग नर्सिंग कॉलेज, तो आपके फाइनल ईयर के बच्चों को 3 months का ओरिएंटेशन वहीं दिया जाएगा। तो प्लीज राइट टू मी और राइट टू नीलांजना और दीपक, इट विल कम टू मी। वी आर, एंड थर्ड इज विच आई डोंट वांट टू से, बिकॉज आप कहेंगे कि आप हमारी नर्सेज को उठा के ले जा रहे हो, दैट इज फॉर द एक्सपीरियंस नर्सेज। 2 to 3 years एक्सपीरियंस नर्सेज आर रिक्वायर्ड इन दीज कंट्रीज। तो ये पता नहीं क्यों, अच्छा बाय द वे नर्सेज पहले भी जा रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं जा रही थी, लेकिन अभी ये ऑर्गेनाइज वे में जाएंगी, तो यू आर अश्योर्ड दैट दे आर गोइंग इन द राइट वे, राइट प्लेस। और एक बात आपको हम कहेंगे कि आप कहेंगे साहब हमारे यहाँ ही नर्सेज की कमी है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप उनको उधर भेजो, अपने आप यहाँ पे और ट्रेन हो जाएंगी। एंड हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही। एंड लास्टली, आई डोंट नो यहाँ पे नर्सेज हैं कि नहीं है, पता नहीं इस प्रोग्राम में, क्योंकि हम लोग कुछ स्टेट की बात करूंगा मैं, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान में वी आर पेइंग 12,000 रुपीज टू द नर्स, BSc। आई डोंट नो उड़ीसा में क्या सैलरी है। उन्हीं स्टेट्स में ड्राइवर की सैलरी है 18 से 20,000। अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द जस्टिस वी आर डूइंग। बट एट द सेम टाइम आई आल्सो नो आपकी फिनेंशियल हालत भी अच्छी नहीं है, दैट यू कैन पे 30,000 टू द नर्स। एनीवे, ये बड़ा एक सब्जेक्ट है, कभी और डिस्कस इसके ऊपर करेंगे। बट दिस इज वेयर आई एम सेइंग दैट इंडिया कैन बी सप्लायर ऑफ हेल्थ केयर वर्कफोर्स टू द एंटायर ग्लोब। ये हमने गलती कर दी है, वी हैव मिस द बस, वी शुड हैव डन इट 10 years बिफोर। हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, यंग पॉपुलेशन है, किसी का ध्यान गया ही नहीं इसके ऊपर। एनीवे, तो अभी ये फाइनली ये जो है आप रेगुलेशन आपने समझ ही लिया। बस मैं ये लास्ट स्लाइड है ये मेरी, ये देख लीजिए आपका, ये हमारे टेक अवेज हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं, दैट दिस इज वेयर यू नो वी कैन सॉल्व द इंडियाज प्रॉब्लम, द हेल्थ एंड वेलनेस टू बी द नेशनल प्रायोरिटी। एंड सो ये इसका इकोनॉमिक्स कैलकुलेशन भी किया गया है कि अगर आपकी हेल्थ वर्कर्स ठीक है, आई मीन पॉपुलेशन इज हेल्दी, योर इकोनॉमिक्स विल जंप एनीवे मैनी फोल्ड। एंड प्राइवेट सेक्टर को फास्ट ट्रैक मेकिंग गुड ऑफ द शॉर्टफॉल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, डॉक्टर, नर्सेज, वो सब चल रहा है। एंड फास्ट ट्रैक ऑफ द काउंसिल फॉर द अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, क्योंकि आपके यहाँ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट सारे आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेते हो, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन ट्रेन्ड। डॉक्टर को तो हमें कहना है मिनिमम MBBS चाहिए, नर्स मिनिमम BSc चाहिए, बट व्हाट अबाउट हेल्थ केयर वर्कर, वो कोई भी आ जाता है। आई मीन ही इज ऑल्सो हैंडलिंग योर ऑल गजेट्स। एनीवे, तो ये सब कुछ बातें हैं। तो मैंने कोशिश तो की है भाई कि मैंने आपको 30 मिनट लगे मेरे हैं, ज़्यादा लगे। आई हैव ट्राई टू गिव यू द जिस्ट ऑफ होल थिंग, बट आई नो बिकॉज अभी एक सेशन और है इसके बाद। It's really nice always to listen to Dr. Gyani. In fact, I'm very happy today. Thank you, ICC, supported by EHP and Department of Health. I will just add a perspective, like while we are discussing robust healthcare infrastructure, because I am connected on the supply side for last 34 years. One of the things which are very common, which are coming up, is the affordability. It is coming about the accessibility, availability. I think these are the topics which are continuously over the whole session, right from Dr. Mahapatra to Garg Madam. Everybody talked about it. I think Navneet ji also talked about democratization of healthcare. So these are also the issues when it are connected on the supply side. And what I'm able to see, a transformation in the ask on the supply side. On one side, creating healthcare infrastructure. Of course, we talked about the skilled people, but for the change, what is happening now, that there is an ask of consolidation.
when it comes to creation of healthcare facilities. The EPC models, which were very much nicely done in the industrial sector, are coming now, emerging in the healthcare infrastructure. And what is also coming up is that companies like us at Medica Bazaar, we are coming up with these models of digitizing your procurement and supply chain. What does this mean is that the three-tier cities as well, or the towns, which have got a lot of aspirations to connect to the main platform, get an even availabilities, even supplies, uninterrupted supplies across. So that's the power of digital transformation. Somebody talked about even the predictiveness, I mean, more from a maintenance, but predictiveness of the supplies, that how can we ensure there are no stockouts. There are technology which is now coming up, and I'm seeing this technology is coming in from a AI ML based SaaS platforms. Even some of these we profess that these give you a place in which you can even plan your future supplies. So I must say that, in the supply side as well, there is lot of things which are getting achieved, and I'm very happy that Medica Bazaar become one of the largest procurement B2B and supply chain platform. If there are any questions, please